हेलो एवरीवन। आप सबने पिकल ज़रूर खाया होगा, अचार। बट डिड यू नो पिकल का मतलब कोई डिफ़िकल्ट सिचुएशन भी होता है? दैट्स राइट। इफ़ यू आर इन अ पिकल, यू आर इन अ डिफ़िकल्ट सिचुएशन। एंड दैट ब्रिंग्स अस टू टुडेज एडिटोरियल दैट वी विल डिस्कस ऑयल प्राइस पिकल. It has been taken from the Hindu newspaper dated 27th of May 2020. पिछले कुछ मंथ्स में हमने देखा किस तरह क्रूड ऑयल के सप्लाई में ग्लट का सिचुएशन बना और प्राइसेस क्रैश कर गए. वो टेक्सास क्रूड का नेगेटिव प्राइस तो आप सबको याद होगा. Now, despite such reductions in global crude oil prices and considerable decrease in the oil import bill and the filled to capacity reserves, so much so as to buy storage space in the US for hoarding crude oil, India did not pass the benefits to the end consumer, us. Government of India in less than past 2 months has increased the excise duty on petrol and diesel. This article seems to discuss the cause and effect of this pickle, oil price pickle. The increased duty on fuel can fund welfare, but arbitrary methods will have implications. Implications are consequences or results that were not clearly or explicitly mentioned. Now, the government's reasoning behind increasing the duty on fuel is हम तो उससे वेलफेयर का खर्च निकालेंगे. That is fair enough. But the editor wants that arbitrary या random methods use करेंगे तो unintended consequences हो सकते हैं. Union Petroleum Minister Dharmendra Pradhan's recent remark that the centre is taking a cautious and conscious approach of ensuring a balance in fuel prices and aims to use the resultant savings for welfare is on the face of it unexceptionable. Unexceptionable है तो उस पर सवाल नहीं उठा सकते. Means the welfare reason that the petroleum minister quoted is fair enough. With global oil prices still about 45% lower than 2019 closing levels despite coordinated supply cuts by major producers, India had an opportunity to pass on the benefit to the consumer and provide a fillip to becalmed consumption. Now, as discussed, this was a chance to pass on the benefits to the end consumer, make the retail prices of petrol and diesel cheap, और becalmed या ठहरे हुए रुके हुए कंजम्पशन को फिलअप या बूस्ट कर सकते थे. But they chose not to. That the deregulated oil marketing companies chose not to reduce pump prices even when crude tumbled last month could be attributed to their caution amid a sharp slump in demand in the wake of the nationwide lockdown. It is the government's decision earlier in May to raise excise duty on petrol and diesel for a second time in less than 2 months that raises several concerns. भारत में तेल बेचने वाली कंपनीज या ऑयल मार्केटिंग कंपनीज ने लॉकडाउन की वजह से हुए डिमांड स्लम्प और उससे हुए रेवेन्यू लॉस की भरपाई के लिए रिटेल प्राइस नहीं घटाया, ये तो समझ में आता है. लेकिन गवर्नमेंट का ये डिसीजन कि लगातार एक्साइज ड्यूटी बढ़ाते चले ये चिंताजनक है. For one, subsequent to the latest increase, the centre's tax revenue on a litre of petrol sold by IOC in Delhi as on May 16 was 1.8 times the fuel's freight inclusive base price of 18.28 rupees and represented 46% of the final retail price of 71.26 rupees. Freight inclusive base fare is the total cost that the government had to bear to procure the fuel. इसमें फ्यूल के प्राइस में उसके ट्रांसपोर्ट का खर्च भी एडेड होता है. नाउ एन ऑब्जर्वेशन हैज़ बीन नोटेड हियर. 16 मई को FIBP या फ्रीट इंक्लूसिव बेस प्राइस ऑफ पेट्रोल वाज 18.28 रुपीज़ पर लीटर. इसका रिटेल प्राइस 71.26 रुपीज़ पर लीटर था दिल्ली में. इसके सेल से सरकार को 32.78 रुपीज़ पर लीटर टैक्स रेवेन्यू मिला. दिस इज़ 1.8 टाइम्स हायर रेवेन्यू दैन द अर्लियर वन. With economic activity brought to a near standstill by the lockdown, the centre's overall revenue prospects have come under severe strain, and from that perspective, the government's move to maximize its takings from transport fuels is understandable. Still, the fact that the government has consistently tinkered with the duty structure through recent years of largely benign oil prices undermines the benefits from pricing deregulations that ought to have accrued to oil companies and consumers. पेट्रोल और डीजल के प्राइस को डीरेगुलेट किया गया था और उन्हें ग्लोबल प्राइस के से लिंक कर दिया गया था. दैट वाज अ गुड स्टेप. इससे ऑयल मार्केटिंग कंपनीज और कंज्यूमर्स दोनों को फ़ायदा था. लेकिन गवर्नमेंट जब तक एक्साइज ड्यूटी के साथ टिंकर करे, छेड़छाड़ करे, तो इससे उस डीरेगुलेशन का फ़ायदा नहीं मिल पाता. दिस इज़ द कंसर्न.
Back in 2018, ahead of key assembly elections, the center had cut the excise duty at a time when global crude prices were on the ascent in order to minimize any electoral fallout from unchecked fuel costs. 2018 के इलेक्शन के टाइम पे वोट्स बचाने के लिए एक्साइज ड्यूटी कम करके पेट्रोल डीजल के दाम घटा दिए गए थे, और अब अपना खर्च निकालने के लिए वापस एक्साइज बढ़ा दिया जा रहा है. ये कैसा डीरेगुलेशन है? The government's goal of maximizing revenue from fuel products to fund welfare measures can only bear fruit if demand for petrol and diesel remains unaffected by the continuing high costs. With curbs on interstate road transport still in place, contracting automobile sales unlikely to recover anytime soon, job losses and pay cuts sure to shrink household budgets, it is hard to see transport fuel demand rebounding to pre-lockdown levels for at least 1 or 2 quarters. ये जो तेल महंगा करके वेलफेयर का खर्च निकालने का सपना है, ये तभी पूरा होगा जब तेल की खपत होगी. जैसा माहौल नज़र आ रहा है, जैसा यहाँ लिखा है, इससे तो वो सपना अभी पूरा होता नहीं दिख रहा. Add to that the fact that the centre's ambitious disinvestment target of 2.1 lakh crore rupees for this fiscal had included a stake sale in BPCL, and the petroleum products pricing approach gets even more complicated. तो उन सारी मौजूद परिस्थितियों में ये भी जोड़ दें कि सरकारी संपत्ति को बेचकर या डिसइन्वेस्टमेंट करके जो 2.1 लाख करोड़ रुपए कमाने का टारगेट था, और इस बिक्री में BPCL भी है, तो अब ये पूरा पिकल ही बन गया. क्योंकि इन्वेस्टर BPCL खरीदेगा ही क्यों जब उसके ऑपरेशन से सरकार को कोई फ़ायदा ही नहीं होने देगी. With potential investors unlikely to be impressed by the lack of autonomy in the sector, it is in the government's interest not to risk the health of the goose that lays the golden eggs. Now, these oil companies are like a goose that lays golden eggs. सोने का अंडा देने वाली मुर्गी है. So it is in the government's interest not to risk its health. अंडे का अचार ही बन जाएगा, खाते रहना. So humor apart, this is what today's editorial was, that subtly criticized the government's move to increase excise duty on fuel and not pass on the benefits to the end consumer. I hope you understood most of it. Do answer the questions in the description box for a better understanding. Thank you for watching. Take care of yourself, stay in and stay safe.